Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies and also revised your previous chapter. Today, we are going to do our chapter 5, which is computer viruses. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of our chapter is computer viruses, and the topics which we will discuss in this lesson are define computer virus and explain its destructive nature, explore types of malware, including Trojan horse, worms, and spyware, understand common ways virus spread, learn the role of antivirus software and firewalls in virus protection, and identify symptoms of a virus infection. We have an activity which says what might be wrong with this computer. So as you can see, यहाँ पे कुछ error show हो रहा है computer पे, which means maybe इसके अंदर कुछ destructive create हुआ है, कुछ conduct हुआ है, which is unwanted and destructive for the system. That means हो सकता है कि system के अंदर virus हो. Now viruses क्या होते हैं? The word virus ये एक एक्रोनियम होता है स्टैंडिंग फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. नाउ कंप्यूटर वायरसेस आर हार्मफुल प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके वर्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं. ये डैमेज कर सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे डेटा फाइल्स, मेमोरी, प्रोग्राम्स एंड इवन द पार्ट ऑफ हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर यूजेस टू स्टार्ट अप. नाउ डोंट कंफ्यूज कंप्यूटर वायरसेस विद बायोलॉजिकल काइंड. बायोलॉजिकल वायरसेस कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें इल कर देते हैं, वेयरएज कंप्यूटर वायरसेस कुछ पीस ऑफ कोड होता है जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो डिजिटल सिस्टम्स को डैमेज कर सके. दे ओनली शेयर नेम बिकॉज दे बोथ कॉज हार्म एंड स्प्रेड. There's a question, how does computer virus different from biological virus? Because जो biological virus होता है वो human beings को affect करता है, उनको ill कर देता है, but कंप्यूटर वायरस एक पीस ऑफ कोड होता है जो हमारे कंप्यूटर के ओवरऑल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है एज वेल एज उसकी डेटा और इंफॉर्मेशन को डैमेज करता है. हाउ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड? तो कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड होते हैं बहुत इजीली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. नाउ ये ऑफन ट्रैवल करते हैं ऑन रिमूवेबल डिवाइसेस जैसे यूएसबी स्टिक्स, sometimes called pen drives. Now within emails या फिर CDs. When you run an infected file या फिर program, virus becomes active. Once it's in the computer's memory, it can start to infect other programs that you use. Now sources of viruses होते हैं जैसे फ्लैश ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लैन फाइल शेयरिंग, ईमेल, इंटरनेट एफटीपी. वायरस स्प्रेड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से एंड कुछ है जो एक्टिव रहते हैं अंटिल यू स्विच द कंप्यूटर ऑफ, वाइल कुछ है जो इन्फेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को वाइल इट्स रनिंग. नाउ वायरसेस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर, कीबोर्ड या फिर मॉनिटर. Do you know one of the first computer virus called Creeper, and it is displayed the message I am the creeper, catch me if you can. Now what a virus can do? Virus क्या क्या कर सकता है? Virus can affect your computer in many ways. For example, it can do any of the following actions जैसे corrupt or delete files. Viruses can copy, modify या फिर delete files in the process of carrying out instructions. As a result, जो document है वो unreadable हो सकते हैं. Programs could fail to launch because deleted or corrupted files are inaccessible. Fill a hard drive with junk data or copies of itself. So by filling a hard drive, computer virus cause कर सकता है computer को to freeze या फिर perform poorly. Another problem is that limited hard disk space could make it impossible to save new files. Now degrade computer performance. Viruses हमारे computer का additional work जो भी होता है वो देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. वायरसेस क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर को एडिशनल टास्क देने लग जाते हैं while performing its typical task. As infected computer will also follow the instruction of the virus. Under this additional workload, computer could perform slow या फिर become non-responsive. Now prevent programs from launching. Viruses जो है वो deliberately prevent करते हैं targeted application को such as a word processor, graphic design software या फिर computers from launching or functioning correctly. Now disable startup by corrupting BIOS firmware. Now BIOS क्या होता है? Basic Input Output System. ये एक read only memory है जो मैनेज करती है डेटा फ्लो को between the computer's operating system and attached devices. ये attached होती है to the motherboard of the computer. ये एग्जीक्यूट करती है while the computer is booting up. कुछ वायरसेस होते हैं जो केपेबल होते हैं of overwriting the BIOS firmware and boot records with malicious code. Spread from one computer to another. वायरसेस जो है वो स्प्रेड होते हैं थ्रू ईमेल्स ओवर द नेटवर्क या फिर कॉपीड करे जा सकते हैं टू डिस्क एंड पेन ड्राइव. इट कैन इफेक्ट द फाइल्स
इन मल्टीपल itself, खुद को वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ज्यादा टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर. व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, वायरस क्या नहीं कर सकता. यूजुअली वायरस को डिजाइन किया जाता है विद मेलिशियस इंटेंशंस, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो वायरसेस नहीं इन्फेक्ट कर सकते. वो कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब इन्फेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ सॉफ्टवेयर फाइल्स को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं. इट कैन नॉट इन्फेक्ट फाइल्स रिटन इन डिस्क सच एज CD रोम. सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वायरस के, ये इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली चेक करो अपने कंप्यूटर सिस्टम को फॉर वायरस. एज अ malware infection puts your personal data at risk. Keep all system software up to date to reduce risk of infection. Now following एक लिस्ट है कॉमन सिम्टम्स की जो अकर होते हैं जब भी हमारा कंप्यूटर इन्फेक्टेड होता है विद वायरस. कंप्यूटर्स हैंग करते हैं या फिर वर्किंग स्टॉप कर देते हैं. स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है. प्रोग्राम्स में बी क्लोज्ड विदाउट योर कंसेंट. ओरिजिनल फाइल्स में हैव बीन मॉडिफाइड या फिर डिलीटेड. फाइल का साइज इंक्रीज हो जाता है ऑन इट्स ओन. अनरीडेबल मैसेजेस बिगिन टू फ्लैश ऑन द स्क्रीन एंड ब्राउजर लिंक में redirect to the unwanted web page. Malware, this is an abbreviated term for malicious software. Now ये स्पेशली डिजाइन की गई है to gain access या फिर damage a computer without the knowledge of the owner. Now malware include करता है कंप्यूटर वायरस, worms, trojan horses and spywares etc. ट्रोजन या फिर ट्रोजन हॉर्स एक कॉम्प्लिकेटेड थ्रेट है टू ऑल. ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ये खुद को रेप्लिकेट नहीं करते, बट दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव. अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हमारे कंप्यूटर सेटिंग्स में होने लग जाते हैं एंड अनयूजुअल एक्टिविटीज हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देती हैं दैट अ ट्रोजन रिसाइड्स ऑन अ कंप्यूटर. वॉर्म, कंप्यूटर वॉर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर है जो डुप्लीकेट करता है खुद को टू स्प्रेड टू अनइफेक्टेड कंप्यूटर्स. Worms often use करते हैं parts of operating system that are automatic and invisible to the user. It is common for worms to be noticed only when their uncontrolled application consumes system resources, slowing or halting other tasks. MS Blaster, So Big are examples of the worm. Now spyware एक type of malicious program होता है जिसको डिजाइन किया जाता है to gather information about users activity secretly. एंड प्राइमरी फंक्शन जो होता है स्पाईवेयर का वो होता है टू स्नूप ऑन अ यूजर्स एक्टिविटी एंड सेंड बैक द डेटा इट्स कलेक्ट टू द हैकर. ट्रांसमवेयर जो है ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को एंड देन लॉक कर देता है ऑन एनक्रिप्ट सम पार्ट्स प्रिवेंटिंग यूजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर कंप्यूटर और डेटा. Commonly, after the ransomware is located on a user's computer, message is displayed demanding payments to unlock it. Types of computer viruses. Different diseases are caused by the spread of different types of viruses. Similarly, computer viruses जो हैं they are also have different types of categories. Let's know about them. सबसे पहले आता है बूट सेक्टर वायरस. तो बूट सेक्टर वायरस मोस्ट मैलिशियस कंप्यूटर वायरस है जो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर के बूट सिस्टम को या फिर मास्टर बूट रिकॉर्ड विच इज MBR ऑफ द हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क. इफ अ बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट अ सिस्टम तो कंप्यूटर कनेक्टेड डिस्क जो होती हैं दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड. Michel Angno and Stone are the most popular boot sector virus. और मैक्रोवायरस ये कंप्यूटर वायरस होता है जिसको प्राइमरी डिजाइन किया गया था टू इन्फेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे वर्ड या फिर एक्सेल फाइल्स. एंड इफ यू ओपन मैक्रोवायरस इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट तो वो एक्टिवेट हो जाता है इन द मेमोरी एंड स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग अदर डॉक्यूमेंट्स. समटाइम्स मैक्रोवायरस सेंड करता है इटसेल्फ बाय अटैचिंग ईमेल्स टू द पर्सन्स इन द यूजर्स एड्रेस बुक. Melissa and Bablis are the most commonly known as macrovirus. प्रोग्राम फाइल वायरस ये जो होता है इनको हम फाइल इन्फेक्टेड वायरस भी बोलते हैं. ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं जैसे प्रोग्राम सजेस्ट .exe com sys वाली फाइल्स को टू मेक देम अनयूजुअल अनस्टेबल एंड परमानेंटली डैमेजिंग. When infected program file is executed, the code of virus is also executed. आफ्टर अ वायरस इज एग्जीक्यूटेड वो एक्टिव रहता है कंप्यूटर की मेमोरी में एंड इन्फेक्ट करता है और भी ज्यादा प्रोग्राम्स को. समटाइम्स प्रोग्राम फाइल वायरस इज कॉल्ड अ फाइल इंजेक्टर. जेरूसलम एंड कैस्केड आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम फाइल वायरसेस. नेक्स्ट इज मल्टी पार्टाइट वायरसेस. इनको हम हाइब्रिड वायरस भी बोलते हैं एंड ये यूज करते हैं फाइल इन्फेक्टर्स को या फिर बूट इन्फेक्टर्स को टू अटैक द बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स साइमल्टेनियसली. जो हमारे मल्टी पार्टाइट वायरस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं बोथ बूट सेक्टर
and program files at the same time, thus causing more damage than any other kind of virus. Example जो होता है इसका वो होता है Ghost Ball Flip Invader, are the first multiparate virus was the Ghost Ball virus. देन पॉलीमॉर्फिक वायरसेस, ये जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर वायरसेस हैं, ये सेल्फ इनक्रिप्टेड वायरस होते हैं डिजाइंड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपॉन इन्फेक्शन। यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिक वायरस हैं ये डुप्लीकेट करते हैं खुद को बाय क्रिएटिंग अनस्टेबल albeit slightly modified copies of itself. Marburg, Persniff, Burlock, Wobfuss, Alkern, and Steinberg are the examples of polymorphic viruses. नो प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस, हमें अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए फ्रॉम वायरसेस एंड मैलवेयर्स, तो उसके लिए हमें अवॉइड करना चाहिए पायरेटेड सीडी डीवीडी टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन आवर सिस्टम। इफ यू आर यूजिंग पेन ड्राइव टू ट्रांसफर डेटा टू योर सिस्टम, आपको मेक श्योर करना चाहिए दैट द ड्राइव इज फ्री फ्रॉम viruses. If your system is connected to a LAN, keep a check on the user to avoid misuse of the system. Don't browse unwanted websites. Install antivirus software in your system. Keep your antivirus software updated. If you are using an external storage media to transfer data, आपको उस डिस्क को स्कैन करना है properly with antivirus software. Avoid reading unwanted emails while working with the email account, and always keep a backup copy of your program and data file. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये एक्ट करता है एज अ डॉक्टर फॉर योर कंप्यूटर, ये स्कैन करता है आपके फाइल्स और प्रोग्राम्स को लुकिंग फॉर वायरसेस एंड अदर हार्मफुल कोड्स। इफ इट फाइंड्स एनीथिंग सस्पिशियस, तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इट कैन क्वारंटीन यानी कि आइसोलेट द इन्फेक्टेड फाइल और इवन रिमूव इट कंप्लीटली। रेगुलर एंटीवायरस स्कैन्स जो होते हैं एंड अपडेट्स वो हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम डिजिटल इलनेस, कीपिंग योर डेटा एंड प्रोग्राम सेफ। कुछ वेल नोन एंटीवायरस प्रोग्राम्स है जैसे नॉर्टन, एवीजी, मैक, सिमेंटेक, स्मार्ट डॉग, कैस्परस्की एटसेट्रा। फायरवॉल, थिंक ऑफ अ फायरवॉल एज अ डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड फॉर योर कंप्यूटर। ये मॉनिटर करता है इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग इन एंड आउट ऑफ योर नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। फायरवॉल के पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये जो डेटा है ये पास थ्रू होने के लिए अलाउड है या नहीं। ये ब्लॉक कर देते हैं सस्पिशियस या फिर हार्मफुल ट्रैफिक को और प्रोटेक्ट करते हैं आपके कंप्यूटर को फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स जैसे वायरसेस एंड हैकर्स। नाउ फायरवॉल एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर कीपिंग योर कंप्यूटर एंड योर इंफॉर्मेशन सेफ। There's a fun time activity, virus alert, जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्रिएट करना है एक वार्निंग पोस्टर अबाउट कंप्यूटर वायरसेस, जिसके अंदर कॉमन वेज होने चाहिए वायरस स्प्रेड होते हैं जैसे हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। Computer viruses are harmful programs. Viruses spread through files, emails, and downloads. Signs of a virus include करते हैं slow computer, strange messages, and missing files. Antivirus software and firewalls protect करते हैं हमारे computers को. There's an activity. Find a recent news article about viruses outbreak or new malware. Summarize करना है आपको इसको for the class. Now let's do the exercise. First is tick the correct option. Computer virus is a malicious program, which is a way viruses spreads pen drives. Antivirus software detects and removes virus. Firewall helps block unauthorized access. Now, a type of malware that disguises itself is a boot checker. Now, fill in the blanks. Viruses can dash files on your computer, damage. And antivirus programs helps delete, या फिर detect, delete and detect viruses. Now, never open email attachments from people you don't know. Firewall can help dash your computer from hackers. Protect. Computer viruses cannot damage your computer. That's true, false. Viruses can fix problems on your computer. False. Storing files on a pen drive can sometimes spread viruses. True. You should open any email attachment you receive. False. Antivirus software should be regularly updated. True. Trojan horse is a type of virus. So students, this was a complete chapter about computer viruses. I hope the chapter is clear to you.
Do revise your chapter once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.